Hi guys, welcome to the channel and आज I am going to talk about something very important जो शायद हम बहुत बार सुनते हैं कि इंटरव्यू में हमें बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत फैंटास्टिक होनी चाहिए. बट नॉर्मली व्हेन वी लुक एट द यूट्यूब वीडियोस व्हिच टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दे टेल यू कि आपको क्या-क्या बात करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए. द मोस्ट कॉमन टिप्स बीइंग कि बहुत सारा रीड करो, ऑल ऑफ दैट. टुडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट दोज टिप्स कि आपको आपके इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना चाहिए. बट in that case I am going to give you some indirect tips जो कि थोड़ी सी uncommon है. So coming back to the topic today, improving communication skills for interviews. Very simple 7 tips student, and I'm sure अगर ये 7 tips आप लोग टिक मार्क लगा रहे हो आपके इंटरव्यू के पहले, for sure you're going to crack your interview and make a remark on the interviewer. Let us start with the most common and the first tip, that is रिसर्च अबाउट द प्रोग्राम. नाउ स्टूडेंट्स, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप किसी प्रोग्राम के बारे में या प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू करते हो, एक एग्जांपल लेते हैं. आप आईपीएम का एग्जाम देने जा रहे हो. इंदौर का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर 12th के बाद आप सीधा आईआईएम में एडमिशन ले सकते हो. देयर इज एन इंटरव्यू राउंड अटैच टू इट. ऑलराइट, नाउ यू शुड एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि अगर मैं आईपीएम की इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए. यू शुड नो द करिकुलम, यू शुड अंडरस्टैंड द मिशन, द वैल्यूज एंड इवन एनी रीसेंट डेवलपमेंट्स जो कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हुई है. ऑटोमेटिकली द वे यू विल कम्युनिकेट विल शो अ लॉट ऑफ ग्रेविटी एंड कॉन्फिडेंस. सो यू हैव टू ensure that you are very well read about that particular program. Now students, it is important for you to tailor your communication to reflect your understanding of the program. आपको वो प्रोग्राम कितने अच्छे से पता है, राइट? सो फॉर दैट इंश्योर कि जिस भी प्रोग्राम के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए. डू नॉट एक्ट सरप्राइज कि अरे मुझे तो ये वाली बात नहीं पता थी. रादर गो over prepared right before your interview, right? Talking about second one. Now students, I have seen a lot of times that बहुत सारे ना बड़े कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप आज से 5 साल बाद क्या बनना चाहते हो, या बोलते हैं ना वेयर डू यू सी योरसेल्फ फ्रॉम नाउ, लाइक 5 years फ्रॉम नाउ. माय पॉइंट इज कि आपको इन क्वेश्चंस को रिहर्स करना चाहिए, इन क्वेश्चंस को एंटिसिपेट करो, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. नाउ बेसिकली क्वेश्चंस हो सकते हैं, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द प्रोग्राम, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. नाउ व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, बिकॉज स्टूडेंट्स एट टाइम्स ये कॉमन क्वेश्चंस को हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस तो आजकल नहीं पूछते. बट एट टाइम्स इफ योर कम्युनिकेशन skills are not that great, the interviewer might still want to know a little bit about you while asking these set of questions. So ensure करो कि इस तरीके के जो questions हैं, where do you see yourself from 5 years from now, all of these you are very well prepared. So do not underestimate the power of simple questions. All right, let's go to tip number 3. Work on your body language. This is very important. I think most of the videos do talk about it, but I'll quickly tell you what part you need to work on. Ensure that you're maintaining an eye contact, ensure that you're affirm, and apart from that, don't fidget. Pen se khel rahe ho, ya let's say ki you're tapping your feet continuously. Don't do that. Stop fidgeting in front of the interviewer. It shows lack of confidence, right? Apart from this, you have to ensure that you're sitting up straight. So these are very tiny tips जो हमें ना तब strike नहीं करती है. But while you're going for the interview and you watch my video, ensure that these tips are being tick marked. Now quickly, you should be clicking the bell icon, subscribe to the channel if you really want me to come up with more such videos for you, which might be useful not for just this upcoming interview, but even otherwise in your life, right? Let's just move to the next tip, student. That is एक्सपैंड योर वोकैबुलरी. मैं मेरे पहले भी वीडियोस में बात बता चुकी हूँ कि हम कोई शशि थरूर नहीं है कि हमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करना आना चाहिए. इन फैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यू शुड नो अ लॉट ऑफ वर्ड्स सो दैट यू कैन आर्टिकुलेट योर थॉट्स इनटू द राइट सेट ऑफ सेंटेंसेस. बट हैविंग सेड दैट, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत तोड़ फोड़ टाइप की वोकैबुलरी यूज करनी है. यूज सिंपल वर्ड्स. जस्ट इंश्योर दैट यू नो अ लॉट ऑफ वर्ड्स टू put your thoughts into the right statements. Repetitive words को use नहीं करना. That's the main agenda. ना कि हमको वहां पे English की Oxford Dictionary बनकर जाना है. Yes, it gives you an upper edge if you have
certain understanding of little fancy words here and there, but that does not mean कि आप अपना original thought process ही भूल जाओ. Therefore, relax. If you're not very well versed with new vocabulary, it's okay. Just ensure that you know the synonyms of lot of daily things or daily words that you are using, और जो भी आपके answers है उसको आप थोड़ा सा in depth कर सकते हो by learning a couple of new words. All right. Moving ahead, students. इस पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग कैन हेल्प यू एक्सपैंड योर वोकैबुलरी. ये कोई ऐसा नया टिप नहीं है. यू ऑल नो दैट इफ यू रीड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इट कैन हेल्प यू एक्सपैंड योर वोकैबुलरी, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज. मॉक का मतलब क्या होता है? ट्रायल. अब पॉइंट ये, हम ट्रायल इंटरव्यूज दें किसके साथ? सबसे पहले खुद के साथ. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ask yourself a couple of questions and start answering to yourself. That should be the first mock interview that you should be giving. Apart from that, you should definitely arrange interviews with your family members, your friends, your mentors, your teachers, maybe your personality development programmers if you at all have them. All of this बेसिकली आपको उस इंटरव्यू के माहौल से कंफर्टेबल होना जरूरी है. दैट्स द लॉजिक ऑफ गिविंग मॉक इंटरव्यूज. यू हैव टू सिट इन दैट पर्टिकुलर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट वेयर यू आर सिटिंग इन अ चेयर. आस्क योर पेरेंट और योर सिबलिंग और योर टीचर टू सिट इन द सेम वे in a very apt environment. Start answering those questions and get your brain trained in that manner. That is the logic behind the mock interviews. It is going to calm down your nerves while you are giving the interview. It's exactly like कि जंग के पहले आप जितनी ज्यादा तैयारी करके जाओगे उतना बेहतर परफॉर्म करोगे. That's exactly the logic behind it. Now students, coming to the second last point, which is be concise, be clear. Unless asked, do not go ahead with any kind of storytelling. वहां पे आप कहानी सुनाने नहीं गए हो. You have to ensure that all the points that you are covering should absolutely be, to the point. हमको वहां पे बहुत ज्यादा मन धड़क कहानियां नहीं सुनानी है, इधर की बात उधर जोड़ के बहुत सारी बातें बताई नहीं. Be very much to the point while you are discussing anything that has been asked. So it is important for you to avoid rambling or maybe using overly complex language that might confuse the interviewer. Keep it concise, keep it clear, keep it simple. All right. Moving to the last and the most important point, students, please highlight only relevant experiences. Now, what does that mean? I have at times seen during interviews that students talk about very trivial experiences that they have. Let me give you an example. I became the monitor of my class for 2 months. Kids, this is not an experience that you have unless you have something stalking point to make over there. Please understand, it might be a very big thing for you, but you have to actually ensure that is it really a big thing for that particular interview or not. If you have a remarkable episode to share from that particular experience, then it definitely makes some sense. But please share only relevant experiences which is going to add a lot of value or weightage to your interviewer, right? Do not add trivial experiences. Now, the important point here is that students, it can be something like आप अपने academics का कोई update बता सकते हो. So when I say update, I mean an achievement you can tell. You can even talk about a personal experience. Let's say you might have gone on a trip and experienced something amazing, or maybe you can talk about some extra co-curricular activity that you are great at. That is also okay. कोई skill set आपकी awesome है तो आप उसके around discuss कर सकते हो. Any kind of achievement which is suitable to the program. अच्छा, at times suitability direct नहीं होगी, but then that's okay. The whole point here being that do not share anything which is a very teeny weeny experience. Ensure that it holds a lot of objectivity to the interviewer and not emotional aspect from your perspective. So I hope students, if I conclude these 7 points, I hope you all have understood what all you need to actually think about. So before I say tata bye bye, let us quickly wrap all the 7 points. The first one was you have to research about the program. The second one was you have to ensure that you are doing all the common questions की practice, like आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, what are your strengths and weaknesses, etc. You should not be underestimating them.
The third one is you have to work on your body language. The fourth one is you have to ensure that your vocabulary is great. The next is you have to practice a lot of mock interviews. You have to be very concise and clear. And last but not the least, most important, have absolute relevance in sharing your experiences. Let me know in the comments below, students, if these 7 points were absolutely simple, easy to apply, and you are going to utilize in your next interview. Tell me if at all these points made a little difference in your interview preparation. While I'll be seeing you in the next video. Thank you.